Hello everyone. So this would be the session third of the environment, and today's target is to complete the pollution topic, and it would be like comprising of each and every type of pollution existing in the environment. So first we are starting with the air pollution. So the first question is, what do you mean by marble cancer or stone leprosy? It is caused by acid rain, dry deposition. Yeah, that is correct. The example like Taj Mahal, okay, the deposition taking around the Taj Mahal, okay. So, what is the difference between primary pollutant and secondary pollutant? A basic difference is there between both. In primary pollutant, the source is known, while in secondary pollutant, it is not known. Actually, what I'm telling is point and non-point sources of the water pollution, but the question is what is the difference between primary pollutant and secondary pollutant? See, what is the difference actually? जो primary pollutants होते हैं, they are added directly to the environment, but secondary pollutants are formed by the interaction with the primary pollutants. For example, PAN, peroxytyl nitrate, PAN जो होता है, ठीक है, so they comes under the category of secondary pollutants. Okay. Uh, in India, what is actually the highest limitation of the noise pollution? Like what level of the noise can be tolerated in dBs? It is measured in dB, no? So what is the value? 80 dBs. 75. 85 is the correct answer. There is one body called as Central Pollution Control Board. So that comes under which act? Environment Protection Act. That 75 was correct, no? 85. That is 85 dB. CPCB comes under Water Act and it derives its power from Air Act as well, but it is formed by Water Act only. And CPCB was asked in prelims 2018 or 2019 might be. So remember it. After that, what is eutrophication? What are the components of eutrophication? Any of the water leads to eutrophication. When excess of nitrates and phosphates added in the water, they become nutrient rich, and then there is a density of the plants increase, so that creates eutrophication. Okay, here correct. And what is acid rain? Like what are the components of the acid rain? Sulfur dioxide, nitrogen dioxide. And also the carbonic acid. Yeah, nitrous oxide and sulfur oxide, they oxidize with the water, and then they became sulfuric acid and nitric acid. Correct. And there is one act, National Green Tribunal is there. So that is formed by which act? Specifically, act I'm asking for MGT. कौन सा act है वो? 10 का एक्ट है. Okay, एक चीज मुझे बताइएगा. Yeah, please. I ask one question. ये जो क्लास अभी चल रही है, that is just on question, मतलब क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे क्या? ऐसा है क्या? मतलब क्या फॉर्मेट है? थोड़ा आप ब्रीफ कर सकती हैं? Yeah, we will be just like cross-questioning because the agenda was given yesterday itself, no? So I guess you might have revised everything, and these are only rapid revision sessions. We will not be discussing each and everything. We will be discussing the most important topics which have appeared already and which can appear. Okay. Actually, I visited first time this channel, na? So I am very new to this, and that is why I asked it. Okay. Thank Yeah, you no so issues at all. No issues at all. Welcome.
Okay, so next question is there was a technology called as happy cedar. So that was seen in context too. This Stubble burning. stubble burning. What is the issue of stubble burning in short? एक्चुअली ये हो रहा है इसमें मेन इशू इज दैट कि पंजाब में जो होता था कि पहले जो मींस बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन इट वाज दी वीट को उन लोग उगाते थे बट आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन दे एक्चुअली स्टार्टेड ग्रोइंग दी राइस लेकिन वो जो वहाँ के जितने भी एनिमल्स है दे आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस ईटिंग राइस और उसके जस्ट बाद उनको रबी की फसल उगानी पड़ती है जिसके कारण से जो रेसिडुअल रिमेन रहता है कटिंग के बाद का उसको उन्हें डायरेक्ट जला देते हैं और वो फिर एयर पोल्यूशन को कॉज कर रहा था एंड दिस इज द मेन इशू ऑफ स्टबल बर्निंग. Okay, correct. So there is one information that NGT has banned this in the states of Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana, and Punjab, but the practice is still there, though it has been banned already. Okay, just remember this in case they ask that what is the मैम वो जो एनजीटी था Please, please. वो आपने जो क्वेश्चन किया था कौन से एक्ट से वो एनजीटी एक्ट ही है उसका आंसर. NGT is a statutory body and it comes under NGT Act 2010 and this was also asked in UPSC 2018 might be. Okay, so uska act डू नॉट फॉलो दी आईपीसी एंड सीआरपीसी का कोई भी उसको एक्ट एंड सेक्शन को फॉलो नहीं करता है एंड वो नेचुरल राइट्स और नेचुरल ह्यूमन राइट्स के ऊपर पे जस्टिस देता है. correct. What is the difference between London smoke and photochemical smoke? फोटोकेमिकल स्मोक का ये था कि वो ओजोन और नाइट्रेट के उससे मिक्स होके ये फॉर्म करता है एंड लंदन स्मोक वाज द सिमिलर दैट हैपेंड ऑन अ डे इन यूके. ये लंदन स्मॉग क्लासिकल स्मॉग है क्या? Yes, London smog is also called classical smog and photochemical smog is also called as Los Angeles smog. Basically, photochemical में क्या होता है? Nitrogen reacts with the sunlight, okay, and in that London smog, sulfur reacts in the humid climate. Okay, there is a basic difference of sulfur and nitrate. London smog was basically because of coal burning. Yeah, but not in like sunny climate. Okay, लंदन वाला जो है वो रिलेटेड है ह्यूमिड क्लाइमेट लाइक कूल थोड़ा सा क्लाइमेट होगा इन दैट केस इट इज रिलेटेड. Okay, what is blue carbon, what is green carbon and black carbon? You have to basically put a difference between three types of carbon: blue, black and green carbon. Actually, in blue carbon, the pollutants are actually stored in the coastal areas, and green, the electricity produced are actually 100% green, and last black. Can you please repeat once again? Your voice is not clear. Okay, in green carbon, actually the carbon is absorbed by the plants and like forested areas. Blue carbon, जिसमें carbon is absorbed by the like coastal bodies, and black carbon is actually the soil. So there's a basic difference between three. Then there is a one question I'll be speaking. That you need to correct it. That is it true of? Isn't hello? Yeah, please speak. Oceanification can be treated as Your voice is not clear to me. ओशियनिफिकेशन जो है वो भी ट्रीट हो सकता है ना ब्लू कार्बन के जैसे.
Yes, ocean acidification can be true. Yeah. Okay, so the question is, first question it is, okay, so the question is, coal ash contain arsenic, lead, mercury, true, false? Ma'am, please repeat. Repeat, ma'am. Coal ash contains arsenic, lead, mercury. True. या जो कोल का ऐश होता है उसमें आर्सेनिक लेड मर्क्यूरी मतलब लाइक ऑलमोस्ट सभी जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन दैट सेकंड स्टेटमेंट इज कोल फायर्ड पावर plants releases sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the environment. True, false? Ma'am, please repeat. Beach में actually voices got out or Okay, the statement is coal fired power plants जो कोल फायरिंग वाले पावर प्लांट्स होते हैं उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो रिलीज होता है. ट्रू, फॉल्स? True. It is correct. Yeah, it is a true statement. And the last statement is low ash content is observed in the Indian coal. मतलब जो इंडिया का कोल होता है उसमें low ash content होता है. True, false? false. Can you repeat the question? Low ash content is observed in the Indian coal. No, it's high as content. मैम ये जो अभी Actually, बोल रहे हैं ना this ये graph has multiple times. स्माइली बना हुआ है जिनका नाम वो प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले जब मैम बोल रहे हैं क्योंकि मैम की आवाज इको हो रही है आपकी वजह से. Please mute. जो नहीं बोल रहे please mute. Okay. Once I unmute myself, then you can speak. So the third statement is incorrect. Okay, so low ash content नहीं होता है. There is a high ash content in the coal. Okay. Now we are moving to second section. So next question is statement first. Fly ash can be produced. Fly ash can be used in the production of bricks for building construction. True, false? Yes. True. Okay. True. Second statement: fly ash cannot be act as a replacement of Portland cement. True, false? False. Okay, yeah, it can be used as a alternate of the Portland cement. Third statement: fly ash contains only silicon dioxide and there is no toxic element present into it. False. Yeah, okay, so false. What are microbits? Like they were observed in news. So what are they actually? Microbits. Small plastics. Small broken plastics. Microplastic Yeah, elements. these are the small broken plastics. Yeah, correct. That cause marine pollution and also lead to the biodiversity loss. Okay. Okay, so there is one statement that black carbon has high albedo. True, false? False. Albedo effect will be because they will absorb each and every light, मतलब every wave. हाई होगा ना मैम उसका तो नहीं वो लो होगा ना उसका. Actually, it's like the more black the substance is, the lower its albedo will be. हाँ तो लो होगा ना. Because it will absorb more sunlight. Exactly. तो black carbon जो होता है that is of black color, so it will absorb more radiations and the less radiations would be reflected back, and because of that the black carbon has a high albedo. Low albedo. Okay, low albedo it has. Okay, there is one more statement. Black carbon stays in the atmosphere for a long period of time. Imagine it is for 2 decades. No. It's a very short-term pollutant. Yeah, it's a short-lived pollutant SLP. Okay, so that stays around for like 5 days or 6 days. This is it. Maximum, I think SF6 होगा.
या मैक्सिमम लाइक 7 days या 1-2 weeks होता है बस, दैट इज इट, उससे ज्यादा इट डजंट एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर. और मैक्सिमम जो रहता है वो SF6 का ज्यादा है ना, मैक्सिमम है, फिर मीथेन का ऐसा है ना. यस, SHF हेक्साफ्लोराइड होता है उसका सबसे हाईएस्ट है, या उसका हाईएस्ट है सबसे. Yes. अभी क्या क्वेश्चन बोला था? SHF सल्फर फ्लोरोक्साइड का सबसे ज्यादा है, फिर मींस डिकेडियल में कितना दिन तक के रहता है जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट. अच्छा, ओके ओके. फिर मीथेन का था, और वो दीज ऑल आर एक्चुअली मेजर्ड ऑन द बेंचमार्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, थैंक यू. वेलकम. Okay, there is a question. Agricultural soil releases the nitrogen oxide into the environment. True, false? True. Yeah. True. Okay. Cattle doesn't releases the ammonia. Is it? It releases. False. It releases methane also. It releases many gases. Yes. And one more statement is there. Poultry industry releases reactive nitrogen component into the environment. True, false? True. Good going. So all the statements are true, and it was asked in UPSC 2019. Okay, there would be some diseases we will be discussing. For example, one is Minamata diseases. So you have to just tell like the basic cause of its reaction. Okay. So Minamata disease. Mercury. Yeah. Mercury. The next is pneumococcis. Pneumococcis is by air pollution के कारण से. लेड है उसका. See, pollution is like basic thing ना. Pollution तो सभी का, अगर मर्क्यूरी भी होगा तो obviously उसका pollution होगा ना. तो that is तो like एक gamete है वो, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा. But basically I'm asking the primary cause. Yeah, I think asbestos industry है. याद नहीं आ रहा. एक्चुअली जो कॉल डस्ट वाला होता है ना, कॉल डस्ट की जो इंडस्ट्री होती है, कॉल इंडस्ट्री, वो होता है इसका बेसिक रीजन. ठीक है. एंड वन इज बाइसिनोसिस. व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस बाइसिनोसिस? What, ma'am? बाइसिनोसिस, BYSINOSSI. बाइसिनोसिस. Okay, so that is observed in the workers where like there is a work of textile industries. Okay, उनसे fumes release होती हैं, so that fume is the basic cause of the biocenosis. And London smoke and photochemical smoke we have discussed already. So there is one more question. Acid rain is caused by. I think we have discussed this. Bacteria. क्या component है? Nitrate and sulfuric acid. Yes, nitrous oxide and sulfur dioxide. Okay, what is cloud seeding? Cloud seeding. वो ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड Actually, डालते they हैं ताकि आर्टिफिशियल रेन करने के लिए. Rain. Wherever the drought-like condition happens, then they attract all the moisture molecules by injecting what I can iodides and Silver bromide. salt nitrate on the atmosphere. Okay, yeah, what you said is totally correct. So cloud seeding is actually the basic process. Yeah, actually, they want to create an aerosol effect so that more sunlight is reflected. Yes. And उसमें silver iodide, dry ice is also used. Okay? नहीं, वो जो आपने बोला ना, वो सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड, उसके लिए कोई और कंपाउंड यूज होता है. ये क्लाउड सीडिंग में तो बारिश आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज होता है. जो वो रिफ्लेक्टिंग सनरेज वाला है वो दूसरा कुछ कंपाउंड है.
वार्मिंग रिड्यूस करने के लिए अरे वो फैक्टर्स दूसरा है लगाए गए बारिश आपके? कराने वाला। सर में डन दुबई। See, तो there उसको are ही two. क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। Just wait a minute. There are two things. दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है क्लाउड सीडिंग, एक होता है क्लाउड थिनिंग। तो जो क्लाउड थिनिंग होता है बेसिकली वो इसके लिए होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है। क्लाउड सीडिंग इज बेसिकली टू इंक्रीज द प्रेसिपिटेशन। ओके, बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, एक में सीडिंग है, एक में थिनिंग है। तो थिनिंग में ये होता है ग्लोबल वार्मिंग, जो इंजेक्शन किया जाता है ना उसमें एरोसोल का, सो दैट इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट। Actually, in 2019 there were a question cloud thinning. Actually, that was, I think. Thinning, which was asked by UPSC. So that is why I asked this, so as to see if you are confused or like, but some get confused. So just to make a rough difference between both, okay, and note it somewhere. Then we have a question: what is actually DDT and endosulfan? Like, what is the actual status of these things in India, and what are they? DDT is DDT are the dimethyl DDT actually fertilizer, and endosulfan a medicine used in cows, and that vultures eat the dead cow and causes very bad effect in them. तो इंडिया में भी वो बैन है डीडीटी। दोनों Yeah, India में ban है. So there is a convention on this, like to stop the propagation of this proliferation of DDT and endosulfan. We have a convention for that. Stockholm. Yeah, Stockholm Convention. Stockholm Convention. Okay, what is electrostatic precipitator and scrubbers? Like, what is the use of these two things? Electrostatic precipitator and scrubber. Basic use. to absorb pollutants from the air polluting gases. और जो भी जितने भी PPP particles है, that is ranging from 2.5 to 10. Okay, absolutely correct. And जो scrubber होता है, that is basically for sulfur dioxide. Though another can be used for electrostatic precipitators, but sulfur dioxide is the main component for which we use it. Yes. And what is the gasification, or like what is gasification? Converting any of the solid waste with the high temperature to the gases that can be used for further productive purpose, that is called as a gasification, like incineration and the pyrolytic effect and all that. Okay, correct. So syngas is the example for that. Syngas. What is the basic difference between BS4 norms and BS6 norms? Basic difference between 4 and 6 Basels. Basel 4 and Basel 6. BS norms. BS norm. BS norm. Okay. BS4 actually basic यही है कि ज़्यादा pollution cause and it will be more efficient as compared to the BS4. I remember little bit like this only. उसमें वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को वो कैटालिटिक यूज करते हैं ना, उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है वो? ओके, यस, एरोमेटिक का कैटालिटिक जो कन्वर्टर रहेगा वो इवन जो भी मतलब कि ड्रॉप पर सेकंड्स पे जो भी इंजन पे गिरेगा ना फ्यूल, उसको पूरा कंप्लीट कंबशन कॉज करेगा इन BS6 एंड इन BS4 इट डू नॉट हैपेंस. तो वो एग्जॉस्ट के उससे बहुत सारा जितना भी पोल्यूटेंट निकलता है तो ये यहाँ पर BS6 पे रिड्यूस हो जाएगा. But
बेसिकली उसमें कौन सा होता है जिसके लिए इन दोनों को यूज किया गया था? मतलब पहले देयर वाज BS4, देन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स वी आर शिफ्टेड टुवर्ड्स BS6. तो व्हाट वाज द बेसिक कंपोनेंट? व्हाट दे वर ट्राइंग? I think nitrous oxide or sulfur. Okay, so that was the sulfur compound. Metal. Okay, though another was there, but the basic motto behind introducing this BS was to reduce the sulfur component. FAME policy comes under which ministry? There is a policy called as FAME. Ministry of Heavy Industries. Okay. Heavy क्या था? Okay, so there is a question based on there is one question based on the National Clean Air Program (NCAP). Okay, so there are two statements. First is it aims to reduce the pollution levels by 20 to 30% by 2024. This is the first statement, and it would be 10-year action agenda plan. So there are two statements. Try answering it. Both are false. false. Actually, first statement is correct. They have to reduce PM 2.5 and 10 wale component. But another one is incorrect. Why? Because it is not a 10-year, it is 5-year agenda. Okay. Okay, said ppm 2.5 to 10. Yes, it was there. And second Yeah. was wrong. I thought 25% and 10%. Okay. So there is a scheme called as System of Air Quality and Weather Forecasting Research, that is also called as SAFAR. So it is the initiative of Ministry of Environment. True, false? False. Earth science. False. और कोई IIT भी है, IITM नहीं, IIT कानपुर से. It's Ministry of Earth Science. Yeah. So this is the SAFAR scheme. This is Ministry of Earth Science, and it will actually measure the quality, air quality in the metropolitan areas. And it was like indigenously developed by IITM Pune. It is not Kanpur. Okay, it is Pune and IMD, India Meteorological Department. Okay. Pune. A basic difference between Vienna Convention and Montreal Protocol. वीना कन्वेंशन में जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर रिड्यूस हो रहा था, उसको रोकने के लिए, वाइल इन सेकंड ऑफ जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1985 का, उसमें ये है कि जो पोल्यूशन जिसके कारण से ये हो रहा है उसको कम करना है, मीन्स उसको बैन करना है या हटाना है. Okay. And what is Basel Convention? बेसल कन्वेंशन Conic waves. में फ्रांस की जितनी भी कन्वेंशन है ताकि वो प्रोटेक्टिव वे पे उसको प्लेस मतलब जो अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके बीच डाला जाए, सो दैट इट विल बी नॉट हार्मफुल टू एनी ऑफ द. बेसल में तो वो रिड्यूस करते हैं ना हैजार्डस सब्सटेंस को अमंग कंट्रीज में, मतलब उनका मूवमेंट. Actually, it prohibits from rich countries to poorer countries. It includes electronic waste as well. Yes. So it is for the hazardous substances. Actually, I couldn't hear you, Roshni. Like the voice was totally breaking. So I couldn't hear you what you said. But yeah, what the Joker said is totally correct. And other voices were breaking.
So there is one statement which I can ask you again that just tell me one thing: are radioactive substances included under the Basel No, Convention? Radioactive, No. no. Yes, it is. yeah, substances are out of ambit of the that Basel Convention. Okay, they are not included in this. Also, if anyone of you have questions, so you can ask to each other. कोई बीओडी और सीओडी में डिफरेंस बता दो. BOD means biological oxygen demand, and what? COD is what? Chemical oxygen. BOD is बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो इनका डिफरेंस बता दो एक छोटा सा. बायो बीओडी में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल किसी वेटलैंड की हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं. वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हें डिग्रेड करने के लिए जितना ऑक्सीजन लगेगा उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है. और जो मतलब दूसरा टाइप का जो वेस्ट होगा उसको केमिकली डिसइंटीग्रेट करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी उसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जितना मुझे समझ में आया है. और अच्छा, इनका कोई एक और वर्ड डिफरेंस है कि जो एक और डिफरेंस है इनमें कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल पे एप्लीकेबल है, और जो सीओडी है वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का non-biodegradable. What is COD? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो Okay, yeah. I want to ask one question regarding the Basel Convention. Okay, here it is given कि waste regulated under the Basel Convention is biomedical and healthcare waste also. So biomedical waste है तो उससे तो रेडियोएक्टिव हो सकता है ना, बिकॉज जो कैंसर के लिए यूज करते हैं जैसे आयोडीन है, कोबाल्ट एंड ऑल दैट, तो दैट कैन बी इंक्लूडेड इन दैट. हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा लिखा है मतलब स्पेसिफिकली कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो उसको कवर नहीं करता, ऐसा लिखा है उसमें. मतलब ओके, केमिकल का ब्रैकेट में अगर कोबाल्ट और आयोडीन दे दिया देन वी कैन टिक इट आउट ना. हाँ, मतलब उसमें ऐसा दे सकते हैं ना वो कि अगर मेडिकल वेस्ट वो कवर करता है नहीं तो आप उसमें टिक कर देना, और अगर रेडियो एक्टिव आए तो उसमें फॉल्स कर देना. अच्छा, एक चीज और पूछता हूँ मैं, अगर बीओडी अगर इंक्रीज होगा तो जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होगा पानी में या ज्यादा होगा? कम होगा ना. कम होगा. It will decrease. कम हो It will जाएगा. decrease. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? डिक्रीज होंगे क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी. ऑक्सीजन सबको इतना मिल नहीं पाएगा. नहीं, अगर बीओडी इंक्रीज होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? मतलब जो प्लांट्स हैं और डिकेड मटेरियल है. BOD यानी Decay कि करने के लिए तो बायोकेमिकल ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड, राइट? नहीं, ज्यादा अगर वेस्ट है तो डीके करने के लिए तो ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होंगे ना. अगर BOD ज्यादा है, वेट, हाँ, बीओडी अगर बीओडी ज्यादा हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म का कम मतलब होंगे. ऑक्सीजन कम है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज होंगे क्योंकि Decrease होंगे. ऑलरेडी BOD कम है हमारा. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारी अगर कम है यानी कि व्हाट डज दैट मीन? नहीं, वो मतलब ऐसा है ना इसमें कि अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है तो उसमें मतलब जो वो डीके कर रहे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मटेरियल को, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है, तो इसका मतलब वो ज्यादा, तो ऐसा है ना. तो बायोलॉजिकल
BOD is the amount of dissolved oxygen, right, needed by the organisms to break the organic material, right? Yes. हाँ हाँ राइट. बीओडी यदि बढ़ रहा है तो मतलब BOD जो हमारा बाकी के ऑर्गेनिजम्स को इतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और जो वेटलैंड के रिगार्डिंग जो बातें होती है कि वेटलैंड को हमें वापस रिवाइव करना है, तो उसमें भी एक चीज ये होती है कि हमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कंट्रोल में रखनी है. ठीक है, वो बढ़ जाएगी तो बाकी ऑर्गेनिज्म के ऊपर गलत इम्पैक्ट होगा. ठीक है, बाकी लोगों को इतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसकी वजह से बाकी इकोसिस्टम इतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी. तो ये भी एक उसमें से एक फैक्टर है. मैं बोल लूं कुछ. ये कोई जो क्वेश्चन है क्या था? बायोलॉजिकल ही इज आस्किंग कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अमाउंट है, पॉपुलेशन है, वो ज्यादा है कि कम है इफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो अगर बढ़ रहा है तो, है ना. द थिंग इज दैट कॉन्सेप्ट ये है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन If it's see if the बोलिए. that only means that microorganisms are more because the demand is more. हाँ यस. तो दिक्कत कहाँ हो गई थी? बस यही था क्वेश्चन, फिर पता नहीं कैसे कॉम्प्लिकेट हो गया. अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. Let us move to the next question. So next question is blueberry syndrome. नाइट्रेट्स के कारण होता है. And what is another name of the same? एम से कुछ नाम है, मिथेनो और समथिंग. I missed it. Can you repeat it? So the name is methemoglobinemia. Okay. And what ये है is due to arsenic? You know, for the quality of call, can we shift to Discord? Like अच्छा, in एक a long क्वेश्चन है. term. वन क्वेश्चन. मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा है? मिथेन का. गूगल करते ना इमेज आ जाती है गूगल इमेजेस में. वेट लेट मी सी इट. हाँ मीथेन. अच्छा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है मीथेन, मतलब इंडिया में सेक्टर वाइज? अरे नाइट्रस पोल्ट्री ऑक्साइड सेक्टर आई थिंक. एग्रीकल्चर सेक्टर. हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर, यस. Methane is produced most by the agriculture, right? जो मैम ने पूछा था वो आर्सेनिक वाला, वो ब्लैक फुट डिजीज है ना? Yeah, that is blackfoot disease. कोई जो ये इसके वो थे ना, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड थी इसका, क्या था ये मेजर्स थे, कंट्रोलिंग मेजर्स, वो बता सकते हैं कोई एक दो? और तुम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन. हाँ, तो वाटर बॉडी में वेस्ट कम डालना है और क्या. अरे नहीं, दो चार नाम है भाई इसके अलग अलग. अच्छा, ये मुझे लगा कम करने का. ऐसा कुछ. Okay, what are the names? Please tell. किस चीज के लिए मैम? अच्छा वो है कि एक तो बायोवेंटिंग, जिसमें हम कैसे कंजर्व किया जा सकता है. ठीक है, तो वो उसमें दो बायोस्पाजिंग, फिर होता है एक बायो ऑगमेंटेशन होता है, एक बायो वेंटिंग होता है. ठीक है, तो बायो वेंटिंग में लाइक एयर वाला यूज हो जाता है. बायो जो ऑगमेंटेशन होता है उसमें ग्राउंड वाटर भी किया जाता है. ठीक है, सो वो है बेसिकली, उन्हें इन सिटू कंजर्वेशन बोल देते हैं. हाँ यस मैम राइट. Let us move थोड़ा सा फास्ट. ठीक है, like 10-15 minutes more to discuss that thing.
So Yes, next is Knock-Knee syndrome. Okay, so Knock-Knee syndrome is caused due to fluoride. Okay. वो उससे हार्ड टूथ डिजीज भी होती है ना, हार्ड टूथ और बोन. Which syndrome? Yes, yes, Please yes. repeat. एक डेफिशिएंसी के कारण होती है और एक एक्सेसिव के कारण होती है ना. तो वाली एक्सेसिव के कारण है आई थिंक. What vitamin? फ्लोराइड. हाँ, वो एक्सेसिव के कारण हार्ड टूथ होती है. हाँ एक्सेसिव है और ये नॉकनी है जो कि डेफिशिएंसी के कारण. करेक्ट. फ्लोराइड एक्सेस हो जाता है तो बिकॉज ऑफ दैट दैट सिंड्रोम हो जाता है. ठीक है, नॉक-नी सिंड्रोम. ओके, एंड आई होप सभी को ऑयल स्पिल पता ही होगा. ठीक है, सो वी विल नॉट गो इन द डिटेल. ऑयल जैपर यू पीपल नो वेरी वेल. ठीक है, सो वी विल बी नॉट गोइंग इनटू द डिटेल. Then after that we have one bunker convention and one is Marple convention and one more is there, that is that Hong Kong convention. So just if anyone can brief what are these actually? They are related to ships. Actually, the ships emit very much sulfur. So the Marple, Hong Kong, all are related to waste released by ships. इंडिया से Okay, and bunker convention is under the aegis of like which organization? कौन सा कन्वेंशन? I don't know, International Maritime. मैम IMO, इज नॉट क्लियर. Maritime or International Maritime Organization. Yes, IMO International. Are you saying something? What are diatoms? Diatoms are algae. Like oxygen? Diatoms are algae. They belongs to चमकते plant हैं. kingdom. Plant phylum. Actually, Roche is correct. They are algae. Okay, and brown algae, dinoflagellates, everything comes under this. Okay, just remember, it was asked in 21 prelims. So cyanobacteria and all these are the family of algae. And algal bloom, what is it? Algal bloom? Like जब too much of nutrients का algae. level Like तो it's blue green algae बहुत बढ़ जाती है, ऐसा कुछ. Right. Then biochemical oxygen demand बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. It happens when how do I describe it? Nitrate बहुत excess हो जाता है. Nitrate pollution. the algae bloom. I'm missing the exact term here. न्यूट्रिएंट रिच वाटर हो जाता है. Eutrophication. Eutrophication. Eutrophication में All are algae correct. Yes, these people are correct. Okay. Now let us move to next topic, and that is bioremediation. Okay, so though we have discussed it yesterday as well, but if anyone can just brief the important dimensions of the bioremediation. Like pollution कम Bioremediation- करने के लिए हम यूज करते हैं एल्गी या कोई भी बायो एजेंट का. Can be बैक्टीरिया एंड anything. फंजाई या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं. जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको वो हाँ, मतलब जैसे salt हीट करके pollution. खत्म कर देते हैं. biological elements or I have a organisms question here. to reduce the, that is Okay. bioremediation. Yes. So I have a question here. Okay. So the question is, does virus comes under this? Like virus act as a decomposer? True, false? It Ma'am, does please act as a decomposer. Yeah. Ma'am,
Yes, we Anyone do else? use. Okay. Just think once, please. Try it again. Does virus act as a decomposer? Yes, False. virus acts. It Virus can. act False. True. False. False. Why not? virus act as a it is true. Bacteriophage is the virus that act as a decomposer. नहीं वो मैम ने शायद कल भी पूछा था ऐसा कि वो जो वायरस होता है ना बैक्टीरिया और वायरस से बिल्कुल अलग होता है. But हाँ it हाँ can be बिल्कुल used. It can be used as an agent. Okay. So हेलो answer is false. Okay. This is a PYQ also, and it was asked this year as well. So just remember, virus is not a decomposer. And why so? Because virus needs the host to replicate itself. And because decomposers, they are dead organisms, so it doesn't replicate. This is a अच्छा PYQ, and as well as I can guess कि ये आपको books में भी मिल जाएगा. Basic thing है ये. So don't get confused. हाँ हाँ decomposer is the bacteria and fungi. Yes. Okay, Prakriti, I guess your title is clear. Like वायरस का साइज भी बहुत कम होता है तो उससे भी हम गेस कर सकते हैं शायद कि या it won't act as a decomposer and it does needs a host to replicate itself. More Don't than know. size is the click here. Okay, size तो ठीक है मतलब like there are many organisms no तो उनका size बहुत minute होगा. It doesn't mean they will not affect our body. The click here is the dead and living material. Okay. एक्चुअली वायरस जो होते हैं ना वो आरएनए वाले होते हैं अगर या डीएनए वाले होते हैं तो दे ऑलवेज नीड समवन टू मींस रेप्लिकेट देम और वो जो भी इट इज जस्ट लाइक अ पैरासाइट समझ लो कि वो दूसरे का होस्ट चाहिए उसको खाने पीने अपने आप को बढ़ाने के लिए सो जब डिकम्पोजर है इट इज ऑलरेडी डेड तो उसको वो लिविंग पार्ट तो मिलेगा नहीं तो हाउ कैन इट विल रिप्लिकेट एंड वो फिर कैसे एक्ट करेगा तो इसलिए वो नहीं है This is the act explanation. Okay, so you can understand. You can understand by this explanation. This is totally correct. Okay, thank It you, Rosh. requires the. एक मैं पूछता हूँ कोई इंडिकेटर बताओ एयर पोल्यूशन का लाइक LICHEN सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट एक वाटर पोल्यूशन का भी ऐसे ही एक है ट्यूबीफैक्ट्स भी होता है कॉरल रीफ भी होता है ट्यूबीफैक्ट्स है ये सभी लाइकेन इवन एक्ट एज अ इंडिकेटर स्पीशीज हाँ वो एक वाटर पोल्यूशन का है ना वो ट्यूबीफैक्ट्स और ये लाइकेंस ज्यादा होगा बिकॉज वो क्या है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर में इट कैन सर्वाइव इजीली हाँ यस मैम करेक्ट अच्छा ये अभी कल भी यही होगा क्या हेलो हेलो एक क्वेश्चन है ये कल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या होता है like I guess the eutrophication which is not in like natural in cause right the anthropogenic causes will be affecting more यस मैम करेक्ट are you saying something What did you say? Like one is conventional and one is caused by anthropogenic factors. yeah there are two things one is caused by the natural and another one is caused by the anthropogenic phenomena so anthropogenic one is also called as like cultural eutrophication Okay. what is the difference between pyrolysis and incineration
One we use Oxygen is without absent in one process. is Okay, do one anaerobic. thing. First of all, Prakriti, you speak, then Roshni, you, and then Joker. Okay, like वरना बहुत ज़्यादा echo हो जाता है. Speak one by one. Prakriti, please first. I think oxygen is absent in pyrolysis. हाँ यही है, मतलब इंसेमिनेशन में हम कंप्लीटली बंद करते हैं, लेकिन उसमें फिर भी कुछ गैसेस जो हार्मफुल होती हैं, लेकिन जो पायरोलिसिस है उसमें हम कंट्रोल्ड ऑक्सीजन के अंदर बर्न करते हैं. Converting waste product into the energy by using controlled way of oxygen, that is called as a pyrolysis. And if we do this in absence of oxygen, that is called as a incineration. Okay. But actually in pyrolysis, both thing happens. Like there can be oxygen ka absence and there can be the controlled atmosphere. So that is pyrolysis. But in incineration, there is a high temperature on which we burn the waste. Okay. So now comes the question here. The question is in context of which one of the following are the terms pyrolysis and plasma gasification is related. So do you need the options, or you can like think कि pyrolysis and plasma gasification किन technology से related हो सकते हैं? previous Solid year का. waste solid waste management. Yeah. Okay. Let me give the option also so that if anyone is new to this, they can understand it well. So the first option is it is used to control the stubble burning. Okay. Second is it is the hydrogen fuel based automobile. Third, it is used as a bioremediation technology to control the oil spills. Fourth option, none of the above. None of the above. Stubble burning. Yeah, actually it can be, because I said it can be used as a means to control the stubble burning. Why? So because जो pyrolysis होती है, it is actually a technology which can convert the waste into energy and the sustainable energies. So obviously अगर stubble burning को you are controlling, so it will help in generation of energy, no? Okay, yeah, sorry. Though it is not directly related, because if I would ask the direct question, which is already verbatim, so why there would be any use of that, no? So there was a just like a bit twist in that. Yeah, I thought it's like plasma and the former technique you told, the plasma something, and then pyrolysis, they both are related to burning, and then stubble burning is also uh, like it's an issue. So I just connected the both things. That's it. Yeah, well, approached really good. Okay, so there is one question. Heptacolor, what is it? HEPTACHLOR. What is it? Pardon, ma'am. HEPTA, heptacolor. CHLOR. What is it? ये तो insecticide. Exactly. So heptacolor क्या होता है? एक टाइप का इंसेक्टिसाइड होते हैं. Okay, and again it comes under the POP, ठीक है? Because it act as a pollutant in the water bodies, and also it like create the havoc in the ecosystem, aquatic ecosystem specifically. Okay, India's rank in e-waste. What is the rank of India in e-waste generation?
second rank? हाईएस्ट यूएस का है ना, और चाइना होगा तो इंडिया थर्ड होना चाहिए. Third. Second, how can we? India is fifth. China. Okay. India is fifth. Okay. Okay. And if I ask state, though it won't be asked, but just an idea, if anyone can tell me कि state कौन सा होगा जो Bangalore. first. Bangalore. कर्नाटक. नहीं, उत्तर प्रदेश. Bangalore. That means Karnataka. No. The city, but state I'm asking. Mumbai. उत्तर प्रदेश. No. Mumbai. I think it's Mumbai. किसके लिए? ई-वेस्ट के लिए. Yeah. What is the financial capital of India? That's Mumbai. Delhi. So that same is e-waste. Okay, that produces the highest e-waste, followed by Tamil Nadu and then Andhra Pradesh. You're saying Mumbai is the topmost state, which Mumbai is the topmost city which produces the e-waste, right? Mumbai is how can state? It is Maharashtra. No? Yeah, I'm saying the city, as ma'am mentioned. So first is Maharashtra, second is Tamil Nadu. Yeah, Tamil Nadu. Okay. Okay, if anyone has any question, we can ask within the 15 minutes and we would be like wrapping the session because it is already 1 hour. So if anyone has any question to ask to anyone, please, like you have 5 minutes for it. Joker can connect to me because I'll be preparing seriously. Okay. Okay, then thanks to everyone for joining. And if you are watching it on YouTube, then please just stay connected. And if you are watching it on Telegram, so like be ready for the tomorrow's session. And I would be updating the like I have already updated the chapters, but those who are following the Shankar I would be updating it on soon. Thank you. Session will